Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images textbook, Class 4th, Chapter 3. The name of the chapter is The Fifth Golden Ticket. Let us read about the author first. Roald Dahl was a British writer who wrote novels, short stories, and poetry. He was born in 1916 to Norwegian parents and he was a pilot who served with the Royal Air Force during the Second World War. अब ये एक पायलट भी थे, राइटर के साथ साथ ये एक पायलट भी हैं. He wrote many books for children which continue to be popular to this day. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए एंड काफ़ी फेमस भी हैं अभी तक. His stories are weird, funny, full of mean adults and clever children. This makes the book very popular with children all over the world. इनकी बुक्स काफ़ी फ़नी भी होती है और इस वजह से काफ़ी फेमस हो जाती हैं. The Fifth Golden Ticket is from the novel Charlie and the Chocolate Factory, which has also been made into a movie twice. अब इस नाम से मूवी भी बनी हुई है और वहीं से हमने ये वाला चैप्टर लिया है. In it, an 11-year-old boy named Charlie Bucket wants nothing more than to win a golden ticket. अब चार्ली बकेट एक 11-year-old boy हैं और ये चाहते हैं एक गोल्डन टिकट को जीतना. This ticket will allow him to visit the marvelous chocolate factory owned by the mysterious Willy Wonka. विली वोंका एक मिस्टीरियस मैन है, उनकी एक चॉकलेट फैक्ट्री है, तो जिसके पास भी गोल्डन टिकट रहेगा वही उस फैक्ट्री में जा पाएगा. Only 5 lucky children will get to visit the factory and who wouldn't want to visit a chocolate factory after all? सारे बच्चे चॉकलेट फैक्ट्री जाना चाहते थे. So this chapter is about that golden ticket only. Let us start the chapter now. Charlie burst through the front door shouting, "Mother, mother, mother." Mrs. Bucket was in the old grandparents' room serving them their evening soup. अब चार्ली एक बॉय है, वो रूम में एंटर होता है फ्रंट डोर से घर में और चिल्ला रहा है वो, मम्मी मम्मी मम्मी. क्यों चिल्ला रहा है वो आगे देखेंगे हम. अब ये जो मिसेस बकेट हैं ये चार्ली की मम्मी हैं जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में थी और वो उनको इवनिंग सूप सर्व कर रही थी. Mother, yelled Charlie, rushing in on them like a hurricane. Look, I've got it. The last golden ticket, it's mine. Hurricane का मतलब है a violent storm with very strong winds. वो सब जगह मम्मी मम्मी ढूंढता हुआ बहुत तेज़ी से सर्च कर रहा था और उसने क्या बोला, उसने अनाउंस करा सबके सामने कि उसे गोल्डन टिकट मिल चुका है. I bought 2 bars of chocolate and the second one had the golden ticket and there were crowds of people all around me wanting to see it and I ran all the way home and here I am. It's the 5th golden ticket, mother, and I found it. अब चार्ली बता रहा है कि उसने शॉप से 2 चॉकलेट्स खरीदे थे, उसमें से जो सेकंड वाला चॉकलेट था उसके अंदर ये गोल्डन टिकट निकला है. जो आसपास की भीड़ थी, क्राउड था, वो सब देखने के लिए आ गए थे कि 5th गोल्डन टिकट कैसा दिखता है, लेकिन इसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और जल्दी से भागता हुआ घर वो टिकट लेकर आ गया है. Mrs. Bucket simply stood and stared while the 4 old grandparents dropped their spoons with a clatter and froze against their pillows. अब जो मिसेस बकेट हैं, चार्ली की मम्मी हैं, वो शांति से खड़ी हुई हैं और उसको सिर्फ देख रही हैं और बाकी के जो 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने स्पून्स गिरा दिए. वो तो सूप पी रहे थे ना, तो उन्होंने स्पून्स गिरा दिए विद अ क्लैटर. शोर की आवाज़ आई एंड वो एकदम से फ्रोज हो गए, वो बिल्कुल नहीं हिल रहे थे. For about 10 seconds, there was absolute silence in the room. Nobody dared to speak or move. 10 सेकंड के लिए पूरे रूम में साइलेंस था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की या मूव करने की. It was a magic moment. Then very softly, Grandpa Joey said, "You're pulling our legs, Charlie, aren't you? You're having a little joke." Pulling our leg means किसी के साथ मजाक करना. तो ग्रैंडपा जोई ने बोला, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना. I am not, cried Charlie, rushing up to the bed and holding out the large and beautiful golden ticket for him to see.
चार्ली ने बोला, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और उसने वो गोल्डन टिकट उन्हें दिखाया। Grandpa Joey leaned forward and took a close look, his nose almost touching the ticket. Grandpa Joey ने गौर से देखा उस टिकट को कि सच में वो गोल्डन टिकट है या नहीं है। The others watched him, waiting for the verdicts. बाकी सारे लोग उसे देख रहे थे ताकि ग्रैंडपा बता सके जोई कि वो टिकट रियली में गोल्डन टिकट है या नहीं है। Then very slowly, with a slow and marvelous grin spreading all over his face, Grandpa Joey lifted his head and looked straight at Charlie. अब ग्रैंडपा को एकदम से देखकर पता लग गया था कि ये वही टिकट है, तो ग्रैंडपा के फेस पर धीरे धीरे से स्माइल आने लगी एंड ग्रैंडपा ने अपना फेस ऊपर उठाकर चार्ली की तरफ देखा। The color was rushing to his cheeks and his eyes were wide open, shining with joy. And in the center of each eye, right in the very center, in the black pupil, a little spark of wild excitement was slowly dancing. अब ग्रैंडपा उस टिकट को देखकर इतने खुश हो गए थे, उनके चेहरे पर वो चमक दिख रही थी, उतनी खुशी दिख रही थी, उनका एक्साइटमेंट दिख रहा था। Suddenly, with no warning whatsoever, he threw up his arms and yelled, "Yippee!" And at the same time, his bowl of soup went flying into the face of Grandpa Josephine. And in one fantastic leap, this old fellow of 96 and a half, who hadn't been out of bed these last 20 years, jumped onto the floor and started doing a dance of victory in his pajamas. अब जैसे ही ग्रैंडपा को रियली में बिलीव हो गया था कि वो गोल्डन टिकट ही है, उनके वो खुशी से जंप करने लगे, yippee, एंड जैसे ही उन्होंने yippee बोला, उनका सोप का बोल जो था वो जाकर ग्रैंडपा जोसेफिन के फेस पर जाके गिर गया। ये 96 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स से ये अपने बेड से उठे नहीं थे, काफ़ी वीक थे, लेकिन फिर भी ये जीत गए थे। इस वजह से ये काफ़ी खुश थे और वो अपने पायजामाज में डांस करने लग गए थे। You can see the excitement of Grandpa Joey dancing. Yippee, he shouted. 3 cheers for Charlie. Hip hip hooray. काफ़ी हैप्पी थे वो, उन्होंने चिल्लाया hip hip hooray. At this point, the door opened and Mr. Bucket walked into the room. इसी टाइम पर जो चार्ली के फादर थे वो भी रूम में एंटर हो गए। He was cold and tired and he looked ill. काफ़ी कोल्ड थे वो, ठंड लग रही थी उन्हें और थक चुके थे, बीमार जैसी शक्ल हो गई थी उनकी। All day long he had been shoveling snow in the streets. चार्ली के पापा रोड के ऊपर जो स्नो जम जाती है उनको हटाने का काम कर रहे थे। What's going on in here? It didn't take them long to tell him what had happened. चार्ली के फादर ने पूछा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जल्दी से उन्होंने चार्ली के फादर को भी सब कुछ बता दिया। I don't believe it, he said. It's not possible. चार्ली के फादर को तो यकीन ही नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। Show him the ticket, Charlie, shouted Grandpa Joey, who was still dancing around the floor in his stripped pajamas. Show your father the 5th and last golden ticket in the world. अब ग्रैंडपा जोई ने डांस करते करते ही बोला कि चार्ली, अपने पापा को वो 5th लास्ट गोल्डन टिकट जल्दी से दिखा दो। See it, Charlie, Mr. Bucket said, collapsing into a chair and holding out his hand. It was a very beautiful thing, this golden ticket, having been made, so it seemed, from sheet of pure gold, hammered out almost to the thinness of paper. अब चार्ली के फादर एक चेयर पे बैठे और उन्होंने वो टिकट अपने हाथ में लिया। बहुत सुंदर गोल्डन टिकट था और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्योर गोल्ड से बना हुआ है। On one side of it, printed by some clever method in jet black letters, was the invitation itself from Mr. Wonka. उस पर प्रिंटेड तरीके से जेट ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था, एक इनविटेशन था फ्रॉम मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक हैं। Read it aloud, said Grandpa Joey, climbing back into bed again at last. अब ग्रैंडपा जोई का जब डांस ख़त्म हो गया तो वो अपने बेड पर बैठे एंड उन्होंने चार्ली से बोला कि जल्दी से इसे रीड करके सुनाओ। Mr. Bucket held the lovely ticket up
close to his eyes. अब Mr. Bucket read कर रहे हैं letter. His hands were trembling slightly and he seemed to be overcome by the whole business. अब उन्हें धीरे धीरे यकीन होना जब स्टार्ट हो गया था तो उनके हाथ जो थे वो हिलने लग गए थे एक्साइटमेंट की वजह से. He took several deep breaths, then he cleared his throat and said, "All right, I'll read it. Here we go." उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और उसके बाद उन्होंने उस लेटर को रीड करना स्टार्ट करा. Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka. Willy Wonka ने greetings दिया. I shake you warmly by the hand. Tremendous things are in store for you. Many wonderful surprises await you. For now, I do invite you to come to my factory and be my guest for one whole day. अब यहाँ पर विली वोंका बोलते हैं कि मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं, तो आप एक दिन के लिए मेरी फैक्ट्री में आइए और मेरे गेस्ट बनिए. You and all others who are lucky enough to find my golden tickets. I, Willy Wonka, will conduct you around the factory myself, showing you everything that there is to see, and afterwards, when it is time to leave, you will be escorted home by a procession of large trucks. विली वोंका ने बोला, मैं खुद तुम्हें अपनी पूरी फैक्ट्री घुमाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, और जब तुम्हारे घर पे वापस जाने का टाइम होगा तो एक ट्रक्स की लंबी रैली के साथ मैं तुम्हें घर भेजूंगा. These trucks, I can promise you, will be loaded with enough delicious eatables to last you and your entire household for many years. विली वोंका ने आगे ये भी बताया कि इस ट्रक में इतना खाने का सामान है कि तुम और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स बहुत सालों तक भी खा सकेंगे. If at any time thereafter you should run out of supplies, you have only to come back to the factory and show this golden ticket. और अगर कभी तुम्हारे खाने का सामान ख़त्म हो जाता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट्री आना है और ये गोल्डन टिकट दिखाना है. And I shall be happy to refill your cupboard with whatever you want. In this way, you will be able to keep yourself supplied with the tasty morsels for the rest of your life. और विली वोंका वो पूरा उनका सामान वापस से रिफ़िल कर देंगे, तो आप सामान ख़त्म करो और वो फ्री में लाइफ टाइम आपको सामान देते रहेंगे, टेस्टी टेस्टी खाना देते रहेंगे. But this is by no means the most exciting thing that will happen on the day of your visit. लेकिन ये तो चलो लाइफ टाइम की बात हो गई, लेकिन जिस दिन आप वहाँ पर आओगे तब भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं आपके लिए. I am preparing other surprises that are even more marvelous and more fantastic for you and for all my beloved golden ticket holders. अब मिस्टर विली वोंका ने बताया सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे सरप्राइजेज़ मैं प्लान कर रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जिसके पास ये गोल्डन टिकट है. जस्ट वेट एंड सी एंड नाउ हेयर आर योर इंस्ट्रक्शंस. तुम बस वेट करो और देखो. अब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी है इसमें. The day I have chosen for the visit is the first day in the month of February. February के मंथ में फर्स्ट डे को आपको आना है. On this day and on no other, you must come to the factory gates at 10 o'clock sharp in the morning. 1 February को मॉर्निंग में 10 बजे आपको फैक्ट्री में आ जाना है. Don't be late and you are allowed to bring with you either one or two members of your family to look after you and to ensure that you don't get into mischief. लेट नहीं होना और अपनी फैमिली में से एक दो मेंबर्स को आप लेकर आ सकते हो ताकि वो आपका ध्यान रखेंगे. One more thing, be certain to have this ticket with you. Otherwise, you will not be admitted. अगर आपके पास ये टिकट नहीं होगा तो आपको फिर एडमिट नहीं किया जाएगा अंदर. The first day of February, cried Mrs. Bucket. But that's tomorrow. Today is the last day of January. I know it is. अब मिसेस बकेट को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि आज तो जनवरी का लास्ट डे है एंड कल ही तो है फेब्रुवरी का फर्स्ट डे. दैट मीन्स कल ही जाना है चॉकलेट फैक्ट्री. You're just in time, shouted Grandpa Joey. There's not a moment to lose. Grandpa Joey ने बोला, बिल्कुल सही टाइम पर तुम्हें टिकट मिला है. अब एक भी मूवमेंट हम वेस्ट नहीं कर सकते. You must start making preparations at once. Wash your face, comb your hair,
Scrub your hands, brush your teeth, blow your nose, cut your nails, polish your shoes, iron your shirt, and for heaven's sake, get all that mud off your pants. You must get ready, my boy. You must get ready for the biggest day of your life. ग्रैंडपा जोई ने बोला जल्दी से अपना फेस वॉश करो, बालों को ठीक करो, हैंड वॉश करो, टीथ ब्रश करो, अपनी नोज़ क्लीन करो, नेल्स कट करो, शूज़ को पॉलिश करो, शर्ट को प्रेस करो और अपने पैंट से इस मड को हटा लो। और तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट डे है, तो तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। Now don't overexcite yourself, Grandpa, Mrs. Bucket said, and don't fluster poor Charlie. We must all try to keep very calm. Now the first thing to decide is this: who is going to go with Charlie to the factory? Mrs. Bucket ने बोला, अब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके लिए ठीक नहीं है और अब हमें काम रहना है, शांति से डिसाइड करना है कि चार्ली के साथ कौन जाने वाला है चॉकलेट फैक्ट्री। I will, shouted Grandpa Joey, leaping out of bed once again. I'll take him, I'll look after him, you leave it to me. अब ग्रैंडपा जोई एकदम से शाउट करे एक्साइटमेंट में, उन्होंने बोला मैं लेके जाऊंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। Mrs. Bucket smiled at the old man. Then she turned to her husband and said, How about you, dear? Don't you think you ought to go? अब मिसेस बकेट ने ग्रैंडपा के लिए तो स्माइल करा और अपने हस्बैंड से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए? Mr. Bucket said gently, Mind you, I'd love to go. It will be tremendously exciting. But on the other hand, I believe that the person who really deserves to go most of all this is Grandpa Joey himself, provided, of course, that he feels well enough. मिस्टर बकेट ने बोला कि मैं जाना तो चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा भी लगेगा मुझे जाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग तो ग्रैंडपा जोई हैं, उन्हें ही जाना चाहिए अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है तो। Yippee! Shouted Grandpa Joey, seizing Charlie by the hands and dancing right round the door. अब ग्रैंडपा इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने चार्ली को अपने गले से लगा लिया एंड वो फिर से पूरे रूम में डांस करने लग गए। He certainly seems well enough, Mrs. Bucket said, laughing. Yes, perhaps Grandpa Joey should be the one to go with him. I certainly can't go myself and leave the other 3 old people all alone in bed for a whole day. अब मिसेस बकेट नहीं जा सकती थी बिकॉज फिर पीछे घर में बहुत सारे ओल्ड मैन हैं और वो ओल्ड लोगों को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और जैसा कि हम देख रहे थे कि ग्रैंडपा जोई इतने एक्साइटेड थे, तो सब ने डिसाइड करा कि ग्रैंडपा जोई उनके साथ जाएंगे। At that point, there came a loud knock on the front door. Mr. Bucket went to open it, and the next moment, swarms of newspapermen and photographers were pouring into the house. अब डोर पे नॉक हुआ, कोई आया था। जैसे ही मिस्टर बकेट ने डोर ओपन किया, बहुत सारे ग्रुप्स में न्यूज़पेपरमैन, फोटोग्राफर्स सब उनके घर में आ रहे थे। They had tracked down the finder of the 5th golden ticket, and now they all wanted to get the full story for the front pages of the morning papers. उन्होंने सब ने पता लगा लिया था कि 5th टिकट किसको मिला है, तो वो सब चाहते थे कि चार्ली की स्टोरी को वो अपने पेपर में सबसे पहले लिखेंगे। It must have been nearly midnight before Mr. Bucket was able to get rid of them so that Charlie could go to bed. आधी रात हो गई थी, तब तक भी सारे प्रेस वाले न्यूज़पेपर मैन्स वहीं पर थे। बड़ी मुश्किल से मिस्टर बकेट ने उन्हें अपने घर से निकाला था ताकि चार्ली सो सके। So this was your chapter. I hope you had fun reading this chapter. Now let us solve the question and answers. First question is, fill in the blanks. Charlie burst through the door calling his mother. Charlie was calling his mother, M-O-T-H-E-R. Next is, Grandpa Joey dashed onto the floor and started doing a dance of. Grandpa Joey jumped, J-U-M-P-E-D, jumped on the floor and started doing a dance of victory, V-I-C-T-O-R-Y. The 5th golden ticket was an invitation from Mr. Willy Wonka, W-I-L-L-Y, W-O-N-K-A.
The owners were asked to visit the chocolate factory on 1st February. 1st February को उनको आने को बोला गया था. Now answer these questions. Why was Charlie so excited? Answer: Charlie was excited because he had won the fifth and last golden ticket. Question 2. Why was everyone in the family in a state of disbelief? Everyone in the family was in a state of disbelief because the chances of winning the golden ticket have seemed impossible for them, as other 4 tickets have already been found. Now, the next question, that is question 3. Why were the newspapermen and photographers at Charlie's door? The newspapermen and photographers were at Charlie's door because Charlie was the winner of the last golden ticket, and now they all wanted to get the full story for the front pages for the morning newspaper. So, with this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, please write me in the comment section below. Thank you so much.